so that we can start with the session. Am I audible to all? Okay, so you must have received your mock feedback as well. So all those who have submitted their mock, they must have received the feedback. Out of all those who are attending live, I can see just Manya's mock being there. Rest all have not submitted even their mock. Even if you're giving it from II, it's okay. But if you're giving it from IFO and you're not submitting your mock, it's very difficult to comment on the comment basically on your progress. So if you wish not to submit your mock, obviously, I mean, we cannot force you to submit, but yes, in case you were appearing it from IFOA, so you should have submitted your mock. So anyways, has the results been declared of the mock as well? So Manya, have you received your result and have you received the topper details and everything message also? Yes, ma'am. Okay. Okay. So let's start with the today's session. We are scheduled for MCQs discussion for the macro. So we did do one session for the macroeconomics MCQ last week. We will be wrapping up basically MCQ in today's session. I wanted to do some more MCQs of macro because अभी भी जो भी mocks मेरे पास आए थे, कुछ students have performed really well, but some of the students have done some mistakes in the mock as well. A lot of mistakes in MCQs. So I wanted to do more of MCQs so that you can be better prepared for the MCQs. So let's start. So I hope the screen is visible to all. So the first question in front of everyone, which of the following could explain why why a country's aggregate demand may shift inwards to the left? Okay, so Vanshika says B, Manya says B, Sanika says B. So, why B? Any one of you can answer. Why B? Just unmute your mic and speak. Why B? मैम अगर करेंसी एप्रिशिएट होगी तो डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स बढ़ जाएगी, उसकी Hmm. वजह से एक्स माइनस एम बड़ा हो जाएगा। Yes, yes. तो इंस्टेंट मतलब देख कर ही हमें समझ में आ रहा है if currency is appreciating, obviously it will lead to increase in imports, and increase in imports is basically an withdrawal. So if there is an increase in withdrawals, it will lead to fall in aggregate demand and will lead to leftward shift of your aggregate demand curve. Next, which of the following statements about real variables in the economy is true? Which of the following statements about real variables in the economy is true? So if nominal GDP rises by 3%, then real GDP must have risen. Nominal GDP must change by a bigger percentage than real GDP if there is positive rise in GDP deflator. Increase in real income will lead to fall in demand for real money balances. Real interest rates can be negative even if both nominal and expected are positive. So which is true? So Manya says D, Sanika says D, Vanshika says D. Okay, so any of you just let me know the reason for choosing D. आप अपना आंसर जो बता रहे हो वो तो बताओ ही कि आप ये वाला ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हो, और बाकी के ऑप्शंस आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो ये भी बताना. So Sanika and Vanshika, any of you would like to answer? Guys, if you are answering it in the chat section, I want a response from you for the reason also. If you don't want to unmute your mic, write it in the chat section, but there should be a reason attached to your option. Which of the following statements about real variables in the economy is true? Why have you given me the option D? What's the reason? I have received 3 answers, one from Manya, one from Sanika, one from Vanshika.
So Sanika and Vanshika, any response from your side? If you are giving an option, you need to be active with your response as well. Manya, your response. Expected inflation rate is higher than the nominal interest rate, then real interest rate will be negative. Yes, perfect. So what was the issue in this explanation? Why taking so much time to explain? This is easy. If real interest rates is basically nominal adjusted for inflation. Now, if inflation comes out to be very high, the real interest rates will turn out to be negative. So the Pancho, it is not B, it has to be D. नॉमिनल जीडीपी अगर राइज कर रही है तो जरूरी नहीं है कि रियल जीडीपी बढ़ेगा. नॉमिनल जीडीपी रियल से बड़ी बढ़ेगी ये भी जरूरी नहीं है. Real interest rates basically can be negative even if both nominal and expected inflation rate are positive. Next one, 17th. In an economy operating significantly below full employment level of output, adoption of an expansionary fiscal policy combined with contractionary monetary policy. So it is fiscal expansion and monetary contractionary. दोनों के results display आपको आप curves use करो, charts बनाओ and just see the results. Expansionary fiscal policy combined with contractionary monetary policy. What will be the impact on aggregate demand and unemployment? Guys, be active. If one student can answer, you can also answer. And you need to be very active with your responses. It's a quick discussion which is going on. इससे ज्यादा टाइम नहीं आपको मिल सकता एमसीक्यू के अंदर. Yes, Manya, it is indeterminate impact on aggregate demand and unemployment because opposite direction में impact हो रहा है. Expansionary fiscal policy will lead to increase in aggregate demand and a fall in unemployment. Contractionary monetary policy का result कुछ और होगा. तो इसलिए indeterminate impact because opposite way में reaction जा रहा है. तो जोन सी पॉलिसी ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करेगी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में इम्पैक्ट जाएगा, जिसकी वजह से answer will be D. Indeterminate impact on aggregate demand and unemployment. Next one. Which one of the following would not constitute a supply side economic policy for reducing unemployment? So yes, it's a monetary policy and it's not a supply side policy. So answer is B. So if you're able to answer easy question and if you're thinking I would be able to clear my exam on answering easy question, that's a wrong thing in your mind because easy everyone is able to answer. In order to segregate yourself from others, you have to make sure that you're answering to the difficult questions, especially all those who have not submitted their tests and mocks. I am not aware about your progress other than the targets that we are sending you and the videos that you have watched. I am not at all aware about your progress. So अगर आपने टेस्ट नहीं सबमिट किए हैं, मॉक्स नहीं सबमिट किए हैं, still you're appearing for your IFO attempt, do make sure that you're working in the right direction. Question 20.
Which one of the following is most likely to lead to cost push inflation? Yes, perfect. So it is increase in trade union powers. Why? Because if there is an increase in those powers, automatically it increases labor costs on the part of the company. When there is an increase in labor costs, basically it acts as a way of increasing the cost, which is cost push inflation. Question 21. Other things remaining same in a closed economy, the effect of cut in government expenditure is this. So Vanshika says A, Dipanshu says A, Manya says A, Sanika says A. Yes, perfect. Answer is A. You know, when there is a cut in government expenditure, that means cut in injection. Cut in injection means fall in aggregate demand. Fall in aggregate demand means only two options with me, either A or B. Now, using AD and AS curve, we can understand that when there is a fall in aggregate demand, it will lead to drop in my interest rates. Question 23. Automatic stabilizers act to dash government expenditure and dash government revenues during a recession. Yes, perfect. Automatic stabilizers act to increase government expenditure and decrease government revenues during a recession. Why? Because automatic stabilizers का क्या काम होता है? Basically stabilize करना. आपको पता है recession के अंदर government के पास पैसा नहीं आ रहा, तो और हमें expenditure अगर करना है, तो stabilizer का मतलब ही यही है कि basically it will act to increase that expenditure. Next, question 24. Planned investment is given to you as 20 million. Government expenditure is 40 million. Planned savings are 50 million and taxes are 25 million. Which of the following is most likely to occur? Guys, be quick. What will be the answer? Planned investment is 20 million. Government expenditure is 40 million. Planned savings are 15 million and taxes are 25 million. So which of the following is most likely to occur? We can see planned investments being greater than planned savings. It's a case of rise in national income. Option A. Let's move now to the next set of questions.
If MPC is given to you as 0.6, they are asking you to calculate multiplier assuming no taxes. Easy. MPC is 0.6. What will be the value of multiplier assuming no taxes? Perfect. It is C. Everyone getting same answer. Next, in order to determine real national income, nominal income is adjusted for which of this thing? Indirect taxes, depreciation of capital stock, population size, changes in price level. So perfect. अभी हमने डिस्कस किया real is nominal adjusted for inflation. So in order to determine real income, we need to adjust nominal for changes in price level. Policies that are designed to support the supply side of the economy do not include this. Policies that are designed to support the supply side do not include, yes, perfect. Sanika, it is C. Increased government spending is basically your fiscal policy. बाकी के सारे policies, reduction in benefits, R&D subsidies and training is something which is done to basically support the supply. During an economic boom, fiscal position is likely to worsen due to lower unemployment, worsen due to higher incomes, improve because of lower tax revenue, improve due to less spending on benefits. So perfect, it is D because इकोनॉमिक बूम है तो लोअर टैक्स रेवेन्यू का मतलब ही नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इम्प्रूव बिकॉज देयर विल बी लेस स्पेंडिंग ऑन बेनिफिट्स गवर्नमेंट will spend less on providing subsidies or any other type of benefits because economy is in a good position. So for 20 the answer is D. Next, in order to avoid the problem of fiscal drag, what should government do? So what do you understand by problem of fiscal drag? First of all, let's understand this. What do we mean by problem of fiscal drag? Then only we can understand okay, whether we have to increase income tax bands or maintain income tax bands or reduce income tax band. So what is fiscal drag? सो बेसिकली आपकी इकोनॉमी में इनकम ग्रोथ हो रही है या फिर इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से यू आर गेट टैक्स पेयर्स जो हैं वो हाई टैक्स ब्रैकेट्स में जा रहे हैं दैट इज नोन एज फिस्कल ड्रैग और उस फिस्कल ड्रैग को अवॉइड करने के लिए अगर हम इनकम टैक्स के बैंड्स बनाएंगे जैसे पहला बैंड ही हम फॉर एग्जांपल 5 लाख टू 10 लाख रखेंगे तो इवन इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन और ग्रोथ इन इनकम 5 लाख से इनकम 7 लाख इंक्रीज हुई है बट दे हैव नॉट मूव टू द higher tax bracket because the band of the income tax bracket is high.
So that is known as problem of fiscal drag. So in order to avoid the problem of fiscal drag, we need to increase income tax bands. First understand what do we mean. We don't have to reduce it. अगर हम बैंड को reduce करेंगे तो और ज्यादा problem फैलेगी कि जरा सा भी इन्फ्लेशन हुआ या इनकम इंक्रीज हुई ऑटोमेटिकली आपका टैक्स ब्रैकेट चेंज हो जाएगा. So answer is D. Next one. Structural unemployment most commonly arises when real wages in economy are too high at particular periods during the year when demand is low, when an industry experiences sustained decline in demand, when there is a sustained decline in AD. So perfect. This is just the definition of structural unemployment, that when an industry experiences decline in demand, we suffer from structural unemployment. Now let's move to next basically set of questions. Which of the following would constitute a supply side economic policy for reducing unemployment? Which of the following would constitute a supply side economic policy for reducing unemployment? So why it is C? Increasing social security benefits. Options are increasing social security benefits, increasing money supply, reducing corporate and personal taxation, increasing government expenditure aimed at exploiting multiplier effect. So why C? Give me the reason for same. Answer is not C. Take your time and give me the answer again. Reducing corporate and personal taxation is basically fiscal side policy. It's not a supply side policy for reducing unemployment. What can we do to reduce unemployment? So Dipanshu says D. Dipanshu, unmute your mic and speak. Why D? Quickly, give me the reason for choosing D. मैम जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा आएगा जिससे सब डिमांड पुश होगी और इनडायरेक्टली हमारी सप्लाई पुश हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. Yes, so answer is D, not C. Don't be in a hurry to submit your answer that you're not understanding what the question is saying. This is the major mistake that many of you commit while doing MCQs. Question 19. Assuming no crowding out effects, the adoption of policy to reduce government budget deficit will involve this.
Assuming no crowding out effects, the adoption of a policy to reduce the government's budget deficit will involve this. गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? पहले हम ये समझते हैं बजट डेफिसिट क्या होता है. तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बजट डेफिसिट? इफ आई से गवर्नमेंट्स बजट इज इन डेफिसिट, व्हाट डज दैट मीन? Basically, government expenditure is more than taxes. Now, if I want to reduce that government budget deficit, that means I have to reduce the government expenditure. In order to reduce government expenditure, the impact would be reduction in AD, reduction in real output. Why still you guys are taking so much time to answer this question? जहां पे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो रहा है वहां कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? Government budget deficit reduction means we want to reduce government expenditure. If we want to reduce government expenditure, we want a cut in basically injections. If we have to cut injections, we have to reduce AD. Next question. Introduction of restrictive monetary policy in an open economy operating with a flexible exchange rate would lead to this. Restrictive policy, open economy. So, Sanika or Manya, any of you just unmute your mic and give me the reason. Why A? मैम अगर रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो हम मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेनर्स को लाइकली लगने लग जाएगी और बेनिफिशियल लगने लग जाएगी. इस वजह से एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाएगा. Okay, perfect. Next, which of the following would not constitute a demand side economic policy for reducing unemployment? Which one of the following would not constitute a demand side economic policy for reducing unemployment? So Dipanshu is saying C, it's wrong. Which one of the following will not constitute demand side economic policy? इसमें से कौन सी डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, आपको ये बताना है. तो मनी सप्लाई आपको साफ साफ दिख रहा है, इट्स नॉट अ डिमांड साइड पॉलिसी. इफ यू आर वर्किंग ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिड्यूसिंग टैक्सेस, प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन, दे ऑल आर डिमांड साइड पॉलिसी. आंसर इज बी. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम ये ऑप्शन सी भी तो मैम डिमांड साइड में नहीं आएगा, वो टैक्सेशन पॉलिसी का पार्ट नहीं होगा. डिमांड साइड में नहीं आएगा ना. रिड्यूस बेसिकली ये डिमांड साइड पॉलिसी है, बिकॉज जैसे ही आप टैक्स पे कट करोगे ऑब्वियसली योर कंजम्पशन विल इंक्रीज. अच्छा, तो ये टेक्निकली उसमें काउंट हो जाएगा, वरना वैसे तो आता नहीं है ना.
नहीं, मतलब आप इसका पूरा पहले इम्पैक्ट चेक किया करो कि ये मेरी सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहा है या डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है। इफ देयर इज एनी फैक्टर विच इज इम्पैक्टिंग योर डिमांड, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिमांड साइड पॉलिसी। ओके मैम। Next, if government imposes a minimum wage that is above your market equilibrium wage, what will happen? If government imposes a minimum wage that is above the market equilibrium wage, what can we expect? मान्या राज सनिका, कंप्लीटली रॉन्ग। आप बिल्कुल भी क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो। इफ गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग अ मिनिमम वेज जो इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर जा रही है, जब हमारी वेज रेट इंक्रीज हो गई, मिनिमम वेज का मतलब है हम इक्विलिब्रियम वेज पे सस्टेन नहीं कर सकते, हमें वही वेज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बेसिकली जो मिनिमम वेज है उस वेज पे विल देयर बी इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड और इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड? आप ग्राफ बना के पहले चेक करो। So Dipanshu says A. Dipanshu, unmute your mic and tell the reason for choosing A. मैम मेरे को बी चूज करना था, मैंने ए कर दिया गलती से। लेबर सप्लाई कब शिफ्ट होगा? वो तो नहीं होएगा। अरे मैं एक ही एक्सप्लेनेशन दे दूं? यस। मैम जब मिनिमम वेज रेट अबव हो जाएगा मार्केट से, तो लोग दूसरी डिमांड दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे, कि जैसे कैपिटल, जो उन्हें ज्यादा चीपर पड़ेगा। तो हाउ विल दिस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड? Question is, if the government is imposing a minimum wage that is above the market equilibrium wage, so how can we expect that this will increase the quantity of labor demanded? हम तो ये बोलेंगे ना कि लेबर सप्लाई बढ़ गई, क्यों? क्योंकि मिनिमम वेज अचीव हो गई है। डी था आंसर, मैं पता नहीं ऑप्शन गलत बोल रहा हूँ। So anyone else who would like to answer? मैंने आपको आंसर बता दिया, आंसर इज ए। Take 2 minutes. If you want to think, you can think and then answer. We're just left with 2, 3 questions more. You can take 1 or 2 minutes to think. ग्राफ बनाने, ग्राफ बना लो। मैम इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ होगा क्या कि वो सस्ती हो जाएगी? जस्ट थिंक, मतलब थोड़ा और सोचो, ग्रिल करो अपने आप को। सो अच्छा, अगर ये बताओ मिनिमम वेज इज अबव द फ्री मार्केट वेज, तो वेदर दिस विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी और दिस विल हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैम एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। If minimum wage is above the free market wage,
तो whether this is leading to increased unemployment or reduced unemployment? जो आप लोग बोल रहे हो कि लेबर सप्लाई बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, लेकिन किस वेज रेट पे बढ़ेगी वो लेबर सप्लाई? सी, व्हेन मिनिमम वेज इज अबव द फ्री मार्केट वेज, तो एक तरीके से प्राइस फ्लोर सेट हो गया. तो दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एट हायर वेज, because at higher wage employers will start demanding fewer workers, and there will be more workers who are willing to work at that wage, creating surplus of labor at higher wage. और अगर मैं करंट वेज की बात करूं, उस पे क्या होएगा? उस पे बेसिकली आपकी लेबर डिमांड करंट वेज पे बढ़ेगी. मतलब हमें बेसिकली, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इक्विलिब्रियम वेज रेट पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम वेज रेट पे तो सिर्फ और सिर्फ इट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेकिन हायर वेज रेट पे इट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड, एंड एक्सेसिव लेबर की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एट हायर वेजेस. तो आपका क्वेश्चन ऐसे वाले केसेस में ना, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इज इट आस्किंग मी द आंसर एट करंट वेज रेट, और इज इट आस्किंग मी द आंसर एट इंक्रीज्ड वेज रेट? सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. नहीं क्लियर है, जैसे इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, आप अपनी वर्किंग में दिखाओ, बिकॉज मैं आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करवाना चाहती हूँ. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दिस इज स्पेशली फॉर आई स्टूडेंट्स, इन केस एनी ऑफ यू हु इज प्लानिंग टू गिव इट फ्रॉम आई, कि दे आर वेरी पिक्यूलियर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड. वो कहते हैं कि हमने तो भाई करंट वेज रेट के हिसाब से पूछा है, बच्चे ने हाई वेज रेट के हिसाब से बता दिया, तो कंप्लीटली रॉन्ग. सो आप दोनों केसेस मेंशन करके पूरा एक्सप्लेन करोगे तो यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. So point is, even if you are answering increase in quantity of labor supplied, that's not wrong. What is wrong is you are not explaining ki why there will be an increase in quantity of labor supplied, because we are mentioning at higher wages. वो मिस था आप तीनों के आंसर में. नेक्स्ट वन, other things being equal, the natural rate of unemployment would increase if this happens. So other things being equal, the natural rate of unemployment would increase if दीपांशु, आप दो ऑप्शंस मत चूज करो, एक ही ऑप्शन चूज करो. इधर इट हैज टू बी ए और सी. अच्छा, ए आई थिंक आपने पहले वाले के लिए लिखा. प्लीज आंसर द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो, आई गेट कंफ्यूज. So Dipanshu has chosen C. If level of labor productivity is rising, the natural rate of unemployment would increase. Are you saying this? यस मैम. So it's wrong. अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कैसे? लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए. लेबर लेबर प्रोडक्टिविटी एज इन कि मेरे को ये लगा कि वो लेबर ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया. सिंगल जैसे एक लेबर है. लेबर प्रोडक्टिविटी मीन्स हाउ एफिशिएंट योर लेबर इज. मैम तो अगर जैसे ये लेबर ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर दिया तो मेरे को और एम्प्लॉयमेंट करने की जरूरत क्या है
उससे तो मैं जैसे 100 लेबर को हायर कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को 100 की जरूरत है, अब मेरे को 110 लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मेरी लेबर की अगर लेबर प्रोडक्टिविटी अगर ऐसे सोचोगे तो फिर लेबर को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का तो सारे आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से ला दोगे। आपको लेबर वर्सेस कैपिटल पे फोकस करो। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो मैं मशीन्स यूज करती हूँ मैं वो मशीन्स यूज करने की बजाय लेबर को हायर करूंगी, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि 100 लोग ये वाला काम कर सकते हैं वर्सेस 10 लोग ये वाला काम कर सकते हैं। तो हम ट्रेनिंग्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? अगर हमें लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ही नहीं है फिर तो सबको ऐसे ही आप अनट्रेन्ड रखो, फिर हायर करने की जरूरत क्या है? Other things being equal, the natural rate of unemployment would increase if length of time for typical job search increased. Because as we have got an answer also, if search time increases, the people will be in long queues to find the jobs and get employed. So broaden your basics first before answering any MCQ question. Government's attempt to increase money supply through open market operations will cause short-term interest rates to this. So government's attempts to increase the narrow money supply through open market operations are likely to cause short-term interest rates to increase, decrease, and what would be the impact on money demand? So Manya, why D? मैम अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होंगे तो गवर्नमेंट अपने जो बॉन्ड्स हैं वो सेल करेगी मार्केट में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, और लोगों को वो खरीदने हैं तो उनकी वजह से उनकी डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, कैश विड्रॉ हो जाएगा बैंक से। So yes, interest rates will definitely fall because of these open market operations. और आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स फॉल होने की वजह से कंजम्पशन बढ़ेगी, ट्रांजैक्शंस मोटिव बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मनी डिमांड विल राइज. सो आंसर इज डी. Last question, assuming all other variables remain constant, decrease in average price level will result in this. Everything is remaining constant and there is a drop in price level. Will this impact our nominal wage? Will this impact our real wage? Will this impact our real interest rates? So perfect C. Decrease in average price level will result in rise in real wage rate. Nominal wage rate remaining constant. Price level decreasing means denominator decreasing. Automatically there will be an increase in real wage rates. So answer is C. So with this, we have wrapped up today's discussion. We are left just with mock discussion. So basically, we will be giving a quick discussion to mock. And with this, we wrap up this entire discussion for April 2025 students. So all the best to everyone and just stay motivated. And jo bhi time bacha hai, just make sure that you're working on your basics. That's it. Nothing else to be done at this point. Only the basics, content revising, and that's it. So with this, we wrap up for the day. Thank you.